Good morning, students. How are you? Fine. Students, in this video, we will discuss the method study. Especially, we will discuss the work study. And this work study includes the study of method, study of motion, study of time, and study of fatigue. Fine. So, let's start with the method study. What do you mean by method study? See, Taylor has suggested that whenever we have any job, it will have some method. So he has emphasized on the listing out the various available method firstly after analyzing, and after listing the methods of the methods which are available for doing a job, it must be get analyzed deeply, and we should analyze the every negative and positive effects of each and every methods. Fine. And after going through this, with the method which have a minimum negative aspect, that must be taken as a best way of doing that particular job. So he has emphasized on the finding on one best way of doing the job. Here, the main purpose of this method study, which by through which the Taylor wants this is to minimize the cost of production and maximize the quality of goods and the satisfaction of customers. Fine. This is the method study. Now let's discuss the motion study. Fine. So, this motion study refers to the analysis of various motions being performed by worker while doing a particular job. जब कोई वर्कर पर्टिकुलर वर्क परफॉर्म कर रहा हो, उस समय उसकी बॉडी मूवमेंट्स को एनालाइज करना, उसकी बॉडी मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करना, एंड आफ्टर गोइंग थ्रू दिस वी मस्ट डिटरमाइन दैट कि विच मोशन इज प्रोडक्टिव ऑफ दैट वर्कर एंड विच मोशन इज नॉट प्रोडक्टिव. फाइन. तो उसमें ये हमें एनालाइज करना है कि कौन सा उसका मूवमेंट जरूरी है, कौन सा उसका मूवमेंट जरूरी नहीं है, कौन सा यूजफुल है और कौन सा यूजफुल नहीं है. और ऐसा डिटरमाइन करने के बाद जो अननेसेसरी मूवमेंट्स है, हमें उनको प्रोडक्शन प्रोसेस से एलिमिनेट करने के लिए वी शुड टेक द करेक्टिव मेजर्स. वी शुड मेक सम व्हाट द प्लानिंग अकॉर्डिंग टू दैट कि हम इस प्रकार के मूवमेंट्स वर्कर्स को परफॉर्म ना करना पड़े. This will save the time and will increase the efficiency of worker. Especially here, the Taylor has suggested that this motion study should get performed through the what help of motion camera by the managers. By sitting in their office, they can see what the motions are being done by the workers. Fine. So next come to the time study. See, in the time study, Taylor suggests that it must be determined the standard time taken by the workers for reasonable skills and ability to perform well-defined job. हमें टाइम स्टडी के थ्रू टेलर ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जब भी कोई पर्टिकुलर डिफाइंड जॉब हमें परफॉर्म करना हो, तो उसके लिए क्या स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए. दैट टाइम शुड बी टेकन बाय द वर्कर्स टू कंप्लीट और अकम्प्लिश दैट जॉब. वी मस्ट डिटरमाइन दिस एंड इट शुड बी स्टैंडर्ड टाइम. So this standard time help in determining how much work of an employee should be able to do in a given period of time. इससे हमें क्या होगा, ये मालूम चल जाएगा कि अगर किसी पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करने का इतना टाइम लग रहा है, तो हम हाउ मेनी या कोई वर्कर एंड एम्प्लॉय हाउ मच वर्क ही कैन डू इन अ गिवन टाइम पीरियड और फ्रेम. So under this time study, the job is divided into the series of elements and time taken to perform each elements of work is recorded with the time measuring devices like stopwatch and other else. And here by taking the average out of all the time taken by the workers to find out or determine the standard work. Through this time study, Taylor's wants to determine the number of workers to be employed. हमें ये मालूम चल जाएगा कि इस वर्क को करने के लिए कितने नंबर ऑफ वर्कर्स की हमें जरूरत है. एंड थ्रू दिस
we must able to determine the proper incentive schemes and the labor cost. Fine. So this is the time study. Fatigue study refers to determining the amount and the frequency of rest of interval of time required in completing a task. टेलर यहाँ पे चाहते हैं कि टेलर का कहना है कि हमें ये पता होना चाहिए कि वर्कर्स को जो वर्क हम असाइन कर रहे हैं या वर्क को कंप्लीट करने हैं, उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए हमें कितने उनका जो है इंटरवल हमें कितना देना है, कितना टाइम पीरियड का होना चाहिए, तो ये हमें डिटरमाइन करना है. Fatigue means the tiredness from physical or mental work. कोई एम्प्लॉय या वर्कर कितने टाइम में कितना टायर्ड फील करता है, चाहे वो मेंटल वर्क्स के प्रेशर से हो, चाहे वो फिजिकल वर्क्स के हो. तो दिस इज कॉल्ड फैटिग. हियर थ्रू दिस टेलर ये सजेस्ट कर रहे हैं कि वर्कर्स जो है एक कंटिन्यूसली पर्टिकुलर वर्क को या काम करते समय वो थक जाते हैं या दे फील द टायर्ड. तो हमें इस टायर्डनेस को रिमूव करने के लिए, उनको रिफ्रेश करने के लिए, री एनर्जाइज करने के लिए we must have a proper we must give them a proper rest of interval of time so that they can re-energize himself and they regain their energy and again they come back on their job with the full efficiency and full effort as they coming in the morning at work. Because if the workers are always or completing the job, or whenever they are doing the job, they are performing it will full efficiency, obviously that will put impact on the productivity of the business. It will increase the productivity as well as its quality. That's why Taylor emphasizes through this fatigue study that we must analyze the time interval of time by observing the workers while performing the job, so that we must note down the time when their efficiency level start decreasing. And in case heavy manual labors and small pauses must be frequently given in the workers, so that they can help or they can recharge his energy level for optimum contributions. Fatigue study help you avoid the accidents, rejections, and industrial sickness. Fine. So there can be many causes of fatigue, like the long working hours, doing unsuitable works, having uncordial relationship with the boss, or bad working conditions, so on. So this all work as a hindrance in the good performance of workers. So it must be removed. That's why the Taylor have emphasized that we must determine the amount and frequency of rest interval of time. हमें ये जरूर डिसाइड करना चाहिए, डिटरमाइन कर लेना चाहिए कि हमारे वर्कर्स को जॉब करने के बाद कितने समय के बाद उनको कितने टाइम का उनको इंटरवल हमें देना चाहिए, जिससे कि वो अपने आप को फिर से रिगेन कर सके, अपनी एनर्जी को रिगेन कर सके, री एनर्जाइज कर सके और रिफ्रेश कर सके, ताकि अगेन आफ्टर इंटरवल व्हेन दे कम बैक ऑन देयर वर्क they can put their full effort. Fine. So this is the objective of fatigue study. So this is all from the work study and the where we gone through the all four study: method study, motion study, time study, and fatigue study. In the next video, we will discuss the differential piece-based system.